Assalamu alaikum. I'm here with new lecture of English language for beginners. जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट की है सीखनी, उनके लिए ये मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए हमें किसी भी चीज़ की बेस का पता होना चाहिए। जो ग्रामर है वो किसी भी लैंग्वेज की बेस होती है। इंग्लिश लैंग्वेज की भी बेस है ग्रामर। ग्रामर पे जब तक आपको पूरी तरह अबूर हासिल नहीं होगा, आपकी ग्रिप पूरी तरह जब तक ग्रामर पे नहीं होगी, आप फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के 3 असूल होते हैं। एक आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए, जो लेटेस्ट वोकैबुलरी है वो आपके पास वोकैबुलरी का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको बेस्ट यूजेस ऑफ ग्रामर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, ऑब्जेक्ट किधर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है और वो कहाँ पे यूज़ होंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म कौन सी सेंटेंस में लगेगी। इन सब चीज़ों का इल्म जब तक नहीं होगा, यू कांट स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। आप कभी भी रवानी से इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसलिए सबसे पहला रूल जो है वो है बेस्ट वोकैबुलरी। यू शुड हैव टू नो अबाउट बेस्ट वोकैबुलरी या लेटेस्ट वोकैबुलरी, जो कि अपग्रेड होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अपग्रेडेड वोकैबुलरी जो है वो आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बेस्ट यूजेज ऑफ ग्रामर एंड देन फ्लुएंटली आप कैसे बोलोगे वो मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह कन्वर्सेशन में बताऊंगी। तो आज का हमारा लेक्चर है, टुडेज आवर लेक्चर इज़ अबाउट वर्ब्स. As we know, verb is action word or any work that subject performs, object for performs in sentence. In sentences, there is action word that is verb. There are 3 forms of verb: present, past and past participle. For example, verb की जो first form है जाना, जाना उसकी first form है go. Go is first form of verb and second form is went and its third form is gone, that is past participle. हमें पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है, तब जाके हम टेंसेस के बारे में बेस्ट सीख सकेंगे। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी फॉर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट में भी वही है, पास्ट में भी वही है और पास्ट पार्टिसिपल में भी वही है। फॉर एग्जांपल कट है, कट की प्रेजेंट भी कट है, पास्ट भी कट है और पास्ट पार्टिसिपल भी कट है। शट जो है, प्रेजेंट इज शट, पास्ट शट, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन any sentence of any tense. If I say Alia washes clothes, Alia subject and wash is verb and clothes object. Wash is first form of verb. When I say Alia washed clothes, it is the sentence of past tense, and washed is the second form of verb, that is past form. And when I say Alia has washed clothes, when the helping verb has or have is used, then in any sentence there is use of third form of verb, that is past participle. Alia has washed clothes. First form of wash is wash, second form is washed, and the third form is also washed. I come. Come is first form of verb come, and its second form is came. I came. When I say I use past sentence, then I say came. I came. When I use perfect tense, I have come. Come is also third form of verb of come. Come, came, come. Child breaks his bat. Yeah, child breaks his cup. Child is subject, break is first form of verb, and cup is object. Child, when I use past sentence, then I say child broke cup. Child broke cup. Broke is second form of verb of break. Child has broken cup, and broken is third form of verb break. Break
broke, broken. Come, came, come. Break, broke, broken. Catch, caught, caught. Catch is first form. Police catch the thief. That is, catch is first form of verb, and police caught the thief. It is the past tense. So I use the verb second form of verb caught. And when I say police has caught the thief, when I use the third form of verb is always used in tenses that are perfect. Police has caught the thief. Caught is third form or past participle form of verb catch. There are many verbs and many three forms of verb are here. In speaking English, tenses are very important. When you have learned 12 tenses of English language, then you should definitely know about the three forms of verb, because verbs are very important in tenses. पहले टेंस में कौन सा वर्ब लगेगा? What is the use of verb in first tense or present tense? What is the use of past verb in past tense? And what is the use of थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन परफेक्ट टेंस? जब तक आपको वर्ब की फॉर्म्स पता नहीं होंगी, आप प्रेजेंट के टेंस नहीं बना सकते, आप पास्ट के टेंस नहीं बना सकते, और ना ही आप जो परफेक्ट टेंस है उसमें थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, वो आप नहीं बना सकते. सो यू शुड हैव learned definitely about three forms of verb. I am here with different forms of verb and different verbs. Let's see what would be structure of first verb and what would be structure of past verb and what would be structure of past participle verb. Here are many examples.